everybody. Hello everybody. Good evening. I hope you are doing good and your CLAT preparation is on the top, right? And so today, after the request from a lot of students, we have come up with a session that is how to prepare for English language section in 6 months for CLAT, AILET and OLET. So do not worry, ये ना सोचना कि सर केवल इंग्लिश सेक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं. What we have decided कि हम सारे टीचर्स अपने अपने सेक्शन के बारे में प्लान करेंगे. It will be easy for you then decide कि कैसे प्लान करना है. Okay, so here we come. Alright, so before we proceed any further, I know still there are some students जिनके मन में ये thought चल रहा है कि कोचिंग को ज्वाइन करे, कोचिंग को ज्वाइन ना करे and all these things. तो इसलिए हमने अपना 1 ईयर के प्लान के लिए नया बैच बनाया हुआ है दैट इज गोइंग टू बी कमेंस फ्रॉम 15th of November. Do enroll us by calling on 9971444054 and you can also visit www.lawentrancindia.com for more information. Our representative will be more than happy to help you and explain you all the information regarding CLAT, AILET and other examination. All right. So here our session begins. Whenever you are planning for, let's say, CLAT preparation, right? This idea comes in your mind कि whether I join the coaching or I should not join the coaching. On the other hand, some students are capable of joining the coaching. On the other hand, there are some who cannot join the coaching. So what I have planned here is the students who are with the coaching and the students who are without the coaching. See, coaching is one of the factors these days for CLAT. It is important to join a coaching. Why? Because the nature of exam has categorically changed. It has changed from conventional method to passage based, right? So for passage based, here not only your knowledge but also your perseverance is checked. So let us see what a student who has joined a coaching can do when he is preparing for CLAT for this coming examination, right? So if you are with coaching, you can see that you do not have to miss your regular classes. So attend your regular classes because you have paid for that, okay? And if you are thinking कि ठीक है, I am getting some online recorded session, I will not join the classes. So how are you going to ask question? How are you going to ask your doubts? So here comes the importance of attending the regular classes. Second is study material, okay? Sometimes what happen, you think कि ठीक है स्टडी मटेरियल बनाया गया है, कोचिंग ने दे दिया एज अ फॉर्मेलिटी. ऐसा होता है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा लगता है लाइक दे हैव जॉइन वेरियस कोचिंग्स, उन्हें ढेर सारी किताबें मिल जाती है, उन्हें लगता है ये तो बाद में पढ़ने की चीज़ें, क्लास तो कर रहे हैं. देखो, what is my personal experience when it comes to preparation? When I prepare for something, I prepare topic in advance. Topic preparing in advance? How sir? ये कैसे पॉसिबल है? ये बड़े आराम से पॉसिबल है. देखो क्या करना है आपको. लेट्स से सर अनाउंस करते हैं कि कल के क्लास में मैं टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ, ओके? तो अब आपका ड्यूटी क्या है? व्हाट इज़ योर ड्यूटी? व्हाट इज़ माय ड्यूटी एज अ स्टूडेंट कि मैं पहले से ही टेंस को पढ़ लूँ, तो 50% तो आइडिया मुझे अच्छे से समझ में आ जाएगा. एंड व्हेन आई एम अटेंडिंग द क्लास 50% अब मुझे भी आसानी से आ जाएगा. सो दिस इज़ द वन ऑफ द बेनिफिट. और ये कैसे पता चलेगा कि सर क्या पढ़ाने वाले हैं, कैसे पढ़ाने वाले हैं. ऑन द अदर हैंड, इंपॉर्टेंट क्या है CLAT एग्जाम को लेकर, you do not have to understand and read everything under the sun, but you have to make sure at the same time कि क्या पढ़ें और क्या ना पढ़े. You have to know the distinction between these both, और वो teachers ही आपको explain कर पाते हैं. इसलिए referring to study material which has been curated by coaching industry, which has been curated by teachers, well qualified teachers, help you prepare your examination. The third point is doubt resolving. कभी कभी स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि डाउट्स तो आते रहते हैं, आई शुड नॉट केयर अबाउट डाउट्स. यू शुड केयर अबाउट डाउट्स, क्योंकि अगर आप बहुत सारे डाउट्स जुटा लेते हो, मे बी एट दैट टाइम जो आपको पूछना चाहिए वो आप भूल चुके होते हो. इसलिए एट द सेम टाइम व्हेन यू आर अटेंडिंग द क्लासेस, हैव द डाउट सॉल्व. डू नॉट वरी, स्टूडेंट्स हु आर नॉट विद कोचिंग, मैं उनके लिए इधर से एक्सप्लेन करूंगा सारी चीज़ें. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स हु आर विद कोचिंग. Now come to the topic test. As you know that every coaching has some LMS, that is learning management system, wherein they put a lot of topic tests to attempt.
sectional test to a term and they also monitor the same. So what your duty is to do is to go to the topic test as soon as you have read that topic in the class itself. तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा जो मैंने पढ़ा मुझे इतना समझ में आया है and इतना नहीं समझ में आया है. Okay, and then attend the sectional test. Sectional test is a compilation of the classes that you have attended throughout the week. So that is also one of the important thing. Now इतना सब करने के बाद do not stop. Keep your evaluation ready. Ask your teachers कि सर कैसा मेरा परफॉर्मेंस चल रहा है आपके सब्जेक्ट में. Because your teachers know you. I'm telling you, my teachers know me. वो जानते हैं कि क्या मेरी स्थिति है कि ब्रिजेश अगर कोई चीज़ पढ़ रहा है so what is his status, and literally it happens because teachers are experienced and they have been in your shoes when he or she was in the classroom. Okay, तो वो पता होता है उन्हें, देख के ही समझ में आ जाता है कि ओके दिस इज माय स्टूडेंट अभिषेक, इसको इस सेक्शन में मेहनत करने की जरूरत है. दिस इज माय स्टूडेंट यू कैन से कुमुद, जिसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मेहनत करने की जरूरत है. वी पर्टिकुलरली नो आवर स्टूडेंट कि किस सेक्शन में किसको मेहनत करने की जरूरत है. But let's say you are coming to me, I will directly tell you कि देखो कुमुद, what I have realized over the time in the classroom, you need to work a bit on your reading comprehension section. Okay, so in that way your preparation is evaluated. At the same time, make sure that build reading habit. I have repeated this line many times in this particular slide. Why? Because reading habit is built. It is not a one day game. It is not a cup of tea. बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि ठीक है मेरी रीडिंग तो बहुत अच्छी है. इट्स नॉट अबाउट रीडिंग अच्छी है, इट्स अबाउट हाउ आर यू गोइंग टू परफॉर्म व्हेन यू आर गोइंग टू सिट इन द एग्जामिनेशन, राइट. तो उस समय टाइम प्रेशर में आपको कोई चीज़ करनी होती है एंड यू गेट अ लॉट ऑफ पैसेजेस, सो वहाँ पे केओटिक सा इन्वॉल्वमेंट ना हो जाए, इसलिए आपको ज़रूरी है कि आप ये रीडिंग की हैबिट बनाते रहें. अगेन वॉच द रिकॉर्डेड सेक्शन इन इफ मिस द क्लासेस. कभी कभी क्या होता है, देयर आर सम अनफोर्सीन सिचुएशन बिफोर यू, लेट्स से अटेंडिंग सम वेडिंग्स विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. समटाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर मैं कहूँ इफ इट्स नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट attend that, sorry, and if it's very important, attend it, but make sure your heart is with the preparation because you get only one chance of preparing, otherwise फिर से एक साल who is gonna waste that year. Okay, so if you have missed any classes, do watch the recorded section. As I told you, every coaching industry, every coaching has this facility of online recorded channels, online recorded lectures, so you can watch the same. Now ये सारे ऐसी चीज़ हैं जो स्टूडेंट्स कर सकते हैं who are with coaching. Now I will be talking about some of the points wherein students who are not with coaching can prepare. ऐसा नहीं है कि केवल कोचिंग के साथ ही प्रिपरेशन किया जाता है. बहुत सारे स्टूडेंट हमारे बीच ऐसे होते हैं, दे आर नॉट इन कंडीशन टू टेक एडमिशन इन एनी कोचिंग. सो व्हाट दे कैन डू, फर्स्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल अंडर द सुपरविजन ऑफ योर मेंटर. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है कि आपको क्या करना है, एक मेंटर को सर्च करना होगा. व्हाई मेंटर? मेंटर की क्या ज़रूरत है? आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा. देखो, एक टर्म है गुरु. गुरु का क्या मतलब होता है? गु इज अंधकार, मीन्स डार्कनेस, and ru means remover, हटाने वाला. सो गुरु जो होते हैं वो आपके जीवन से डार्कनेस हटाते हैं. सो इन योर टर्म्स, अभी जो क्लैट की प्रिपरेशन आप करने जा रहे हो, आपको कुछ नहीं पता, यू डू नॉट हैव एनी आइडिया, यू वॉच अ लॉट ऑफ वीडियो चैनल्स, यू वॉच अ लॉट ऑफ यूट्यूब वीडियोस, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या होता है क्लैट, कैसे प्रिपरेशन करते हैं क्लैट की. सो एट दैट टाइम यू नीड अ गुरु, यू नीड अ मेंटर, यू नीड समवन हु कैन गाइड यू. इट कैन बी एनीबडी, हु इज योर चाचा, अंकल, पापा, who has been in this preparation, okay, or who is a law student जिसने ऐसे preparation करा हुआ है, anybody. So ask him कि भैया और दीदी please help me prepare my timetable, how should I go about this CLAT preparation because I have only 6 months left. So in that way they will help you, and if you have a desperate desire, I would tell you people will help you. Okay, so point number 2, regularly visit MLC YouTube channels जिसमें हम DNA करते हैं, डेली न्यूज़ एनालिसिस, एंड देन वोकैबलरी सेक्शन पर डे एक मैं बनाता हूँ, एंड देन लीगल जीके इज बीइंग डिस्कस बाय श्री दिनेश सर जो कि हमारे लीगल फैकल्टी हैं. वॉचिंग दिस सेक्शंस, वॉचिंग दिस वीडियोज़ विल हेल्प यू क्लियर योर डाउट्स रिगार्डिंग कि मुझे न्यूज़ में क्या ध्यान देना चाहिए, मुझे वोकैब को कैसे समझना चाहिए. ऑन द अदर हैंड लीगल न्यूज़ होते हैं, उसके क्या बैकग्राउंड एंड ऑल होते हैं, राइट. देन कम्स बिल्ड रीडिंग हैबिट्स. अगेन देखो,
if you are a coaching student, if you are not a coaching student, reading habit has to be built at any case. if you feel कि नहीं मैं रीडिंग में कमज़ोर हो रहा हूँ, देखो वेरियस टाइम, ये कोई जादू की जिन नहीं है जिसको आपने रगड़ा और आराम से आपका जिन निकलेगा एंड इट विल हेल्प यू. इट्स नॉट द केस. यू हैव टू बिल्ड इट ओवर द टाइम. इट कैन नॉट बी अटेन्ड इन अ डे. आपको प्रैक्टिस करना ही की है. सो रीडिंग हैबिट को बिल्ड करना ही होगा. नाउ रेफर वेरियस प्रोमिनेंट बुक्स अवेलेबल इन द मार्केट. रीडिंग हैबिट्स के बाद भी अगर आप किसी कोचिंग संस्था से नहीं जुड़े हो, यू कैन बाई द स्टडी मटेरियल ऑफ मनु लॉ क्लासेस एंड वेरियस अदर कोचिंग एज वेल. एंड इफ यू कैनॉट अफोर्ड दैट टू, सो यू कैन ऑल्सो रेफर, देयर आर सो मेनी बुक्स विच हैज़ अ लॉट ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, विच हैज़ स्ट्रेटजी, विच हैज़ प्लानिंग. तो आप इसे खरीद सकते हो. Then have your preparation evaluated through your mentor. Again, if your mentor can help you prepare your timetable, he or she can timely guide you कि यहाँ पे आपको कमी है, यहाँ पे आपका ऐसे होना चाहिए. Okay, so in that way, if you are with coaching or without coaching, you can do it. Now moving forward, moving on to the next slide, that is prepare a detailed realistic schedule. है ना? Why do I emphasize on realistic? समटाइम क्या होता है, स्टूडेंट ऐसा टाइम टेबल बनाते हैं जिसमें वो अपने आप को रोबोट और एक मशीन के जैसे ट्रीट करने लगते हैं कि नहीं 7 o'clock पे उठना है, 8 o'clock पे ये करना है, 9 o'clock पे ये करना है, 10 o'clock पे. यू आर अ ह्यूमन बीइंग. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. अगर आप ह्यूमन हो, सो यू हैव सम लूप होल्स, यू हैव सम स्ट्रेंथ. तो प्लान अकॉर्डिंगली. अंडरस्टैंड योर बॉडी, हाउ इट वर्क्स. आप दिन में पढ़ना पसंद करते हो, आप रात में पढ़ना पसंद करते हो, आप नाइट आउल हो, आप मॉर्निंग बर्ड हो, कुछ भी हो. ट्राई टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ कि आप कौन हो. एंड आफ्टर दैट प्रिपेयर अ रियलिस्टिक शेड्यूल जिसमें आपकी बॉडी फिट करती है. क्योंकि जरा सा भी लेस स्लीपिंग और ओवर थिंकिंग और टेंशन, स्ट्रेस, ये सारी आपकी प्रिपरेशन को इफेक्ट करता है. ओके, सो एक डिटेल आपने शेड्यूल बनाया. उसके बाद क्या किया आपने, टॉपिक विद स्पेसिफिक डेडलाइन. डेडलाइन इज द की. देखो एलॉन मस्क भी इस बात को बार बार कहते हैं कि इफ़ यू आर गिवन अ रूम टू क्लीन 30 days, यू विल टेक 30 days टू क्लीन इट. ऑन दी अदर हैंड, इफ़ यू सेट अ डेडलाइन कि मैं 3 दिन में इस कमरे को साफ कर दूंगा, एंड यू विल डू इट. सो दिस इज द की ऑफ सेटिंग अ डेडलाइन. सो विथ एवरी स्पेसिफिक टॉपिक जो आपको पढ़ना है, मार्क डेडलाइन कि बाय दिस टाइम, I am especially talking about English section. This can be implemented on various other topics as well. Let's say legal आप पढ़ रहे हो, उसमें आपने nuisance पढ़ा under law of tort, उसे mark कर दो कि by 7th of December I have to finish this topic. Deadline means specific deadline. Okay, this will work. This will help you. This will prepare yourself to fight fight this. You know, sometimes you are reluctant. Sometimes you are lazy. If you are just putting a deadline, this will help you fight your laziness. Okay, now allot specific hour for every subject. देखो this is very very important. अगर मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ तो मैं ये नहीं कह रहा कि थ्रू आउट द डे यू हैव टू रीड ओनली इंग्लिश. यू हैव टू अलॉट टाइम फॉर एवरी सब्जेक्ट, बी इट इंग्लिश, बी इट मैथ्स, बी इट लीगल. सभी सब्जेक्ट्स के लिए आप टाइम अलॉट कर दो, टाइम टेबल बना लो. द इजी वे टू डू इट, डाउनलोड अ कैलेंडर. लेट्स से इट्स नवंबर मंथ. ओके, सो एक नवंबर मंथ का कैलेंडर डाउनलोड कर लो, पेस्ट इट समवेयर वर्ड फाइल में, उसमें टाइप कर लो कि बाय दिस डे आई विल डू दिस, बाय दिस डे आई विल डू दिस, बाय दिस डे आई विल डू दिस. इस तरह से यू हैव प्लान्ड स्ट्रेटेजिकली सो दैट यू कैन नाउ you will not be in a chaos कि क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है. So it will be totally set. So specific hour for every subject. Now develop reading habits. देखो फिर से मैंने कहा कि I have incorporated this line again and again to remind you that CLAT preparation or AILET preparation or any other law entrance preparation requires reading. Even being a lawyer requires reading. अगर आप reading में अच्छे नहीं हो और अगर आपको reading boring लगता है, if you think कि I'm not a reading person, don't go for law. I urge you, because law means reading. अगर law आपको करना है तो reading अच्छी होनी चाहिए, habit होनी चाहिए. डेवलप रीडिंग हैबिट्स कैसे, बाय रीडिंग एटलीस्ट 2 hours अ डे. सो 2 hour जैसे आपने शेड्यूल बनाया तो 2 hour अपने आप की केवल रीडिंग का दे दिया. सो अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा कि रीडिंग हैबिट्स कैसे डेवलप होती है. सम स्टूडेंट फाइंड न्यूज़पेपर इज बोरिंग, सम स्टूडेंट फाइंड कि ओके आई एम नॉट गुड एट रीडिंग न्यूज़पेपर, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, एडिटोरियल समझ नहीं आता. तो कैसे करना है, आई विल हेल्प यू देयर जब मेरा वो स्लाइड आएगा. नेक्स्ट, बैलेंस द प्रिपरेशन बाय शेड्यूलिंग एवरी सब्जेक्ट कैटेगरिकली. जैसा कि मैंने बोला, कहा क्या बोला कि बैलेंस करो अपने प्रिपरेशन को शेड्यूल बनाकर.
कैटेगरिकली. सो जैसे ही आपने आवर डिसाइड किया, आपने अपने शेड्यूल को डिसाइड कर लिया. ऑलराइट, सो फर्दर selection of sources, this is also one of the important thing. To do, to not to do, not to do is something you need to be focused upon. क्या नहीं पढ़ना है वो भी important है. So देखो अभी जैसे selection of sources में you can see I have just quoted 2 newspaper. There are a lot of newspaper that you can keep reading, but what is the importance of doing so much effort there? 2 या 1 कोई न्यूज़पेपर ले लो, उसे पढ़ना शुरू करो. ओके, और मैगजीन में से द फ्रंट लाइन एंड EPW is something that you should read. There are various, you can also refer that too. Prominent novels and book. देखो novels and books are quite interesting in comparison to newspaper. So आप वहाँ पे क्या करते हो, न्यूज़पेपर को अगर बोरिंग लगता है तो start developing this habit by reading some novels, but make sure that you do not indulge yourself कि नहीं अब मुझे सीरीज ही खत्म करना है, सारी चीज़ साइड रखो. नहीं, सेट स्पेसिफिक टाइम कि इतने देर से इतने देर ये चीज़ मुझे पढ़ना है, एंड मेक इट इक्लेक्टिक. इक्लेक्टिक मीन्स सब कुछ पढ़ो. जरूरी नहीं है कि 6 महीने आपने हैरी पॉटर की सीरीज ही खत्म कर दिया, आप फिर बाद में कहो सर मैंने खूब पढ़ाई करी है, लेकिन आपने केवल एक जॉनरा पढ़ा है ना. तो आप इक्लेक्टिक बनाओ इसे. हिस्टोरिकल चीज़ें पढ़ो, साइंटिफिक चीज़ें पढ़ो, आर्ट्स से पढ़ो, स्पोर्ट्स से पढ़ो, इकोनॉमिक्स से पढ़ो. रीड एवरीथिंग जो भी आपको सामने मिले. दैट्स वाई वी कंसीडर न्यूज़पेपर, क्योंकि उसमें वेरियस कैटेगरी होती है. Then referring to blogs, and there's various fora. Fora is a plural verb for forum. बहुत सारे legal and general forums हैं, that like live law and bar and bench. बहुत सारे legal form में foras हैं जिसे आप refer कर सकते हो when you are building this habit of reading, right? Now here comes newspaper reading. जैसा कि मैंने बोला कि when slide comes I will be explaining you. कुछ students को लगता है कि newspaper reading is the most boring thing in the world. ऐसा है, like if you are not interesting person, or if you are not a person who has interest in reading, right, you have to read newspaper. पहले जान लो कि newspaper पढ़ना क्यों चाहिए. Some people are not good at speaking. Some people are not good speaker when they are at the stage. Some people when they meet with when they join a group, they leave silent. They are silent. Why? Because उन्हें लगता है कुछ ऐसा पूछ लिया तो क्या जवाब दूंगा. वहाँ पे if you want to be a good speaker, you know, if you want to be a sociable person जिसमें बहुत सारे sharing हो, caring हो, तो you have to be acquainted with surrounding going on. क्या चल रहा है आपके सामने वो आपको पता होना चाहिए. आप जब तक न्यूज़पेपर नहीं पढ़ोगे आपको पता नहीं चलेगा कि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है. And when 4 people are talking about, जानते हो यहाँ पे कुछ चल रहा है, and you are like, what's going on? I do not know. Why? Because you are not reading the newspaper. Okay, so that is the important thing, and that is why you have to keep yourself updated. आगे करते हैं बात. Start reading news, easy news, right? Easy news क्या होता है? Easy news वो होते हैं जिसमें कि let's say कोई एक्सीडेंट हो गया, let's say कोई मैरिज हुई थी और रिसेंट में कोई घटना हो गई, let's say कि कोई स्टूडेंट है वो पढ़ाई कर रहा था और उसको गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप दे दिया. तो इस तरह की फर्स्ट पेज की न्यूज़, सेकंड पेज की न्यूज़. अगर आप वीक हो, अगर आप बिगिनर हो तो ठीक है. इफ़ यू थिंक योर रीडिंग इज स्ट्रांग, योर अंडरस्टैंडिंग इज स्ट्रांग, गो फॉर एडिटोरियल डायरेक्टली. बट इफ़ यू थिंक कि मुझे मज़ा नहीं आता रीडिंग न्यूज़पेपर करने में, सो गो फॉर द ईजी न्यूज़. ईजी न्यूज़ इज related to the activities that is going on in your city, right? And then come to the editorial page and then note down words. This is quite important क्योंकि रोज आप पढ़ते जाओगे. keep noting down. One of my student, her name is Shivali, she writes a lot of words and now her command over vocab is awesome. Like she joined 2 months back and now she has a lot of command over vocabulary. वो per day at least 20 to 30 words निकालती है, उसे practice करती है, discuss करती है, and this is the way she is preparing a lot. Now read news of all these section, as I said, sports, economics and legal. इससे और सारे भी बहुत सारे हैं that you can do, ताकि आपकी जो preparation है वो एस में बनी रहे और eclectic reading साथ में होती रहे. Now एक question आता है मन में कि सर MCQ जो बनाते क्या मुझे खुद से बनाना चाहिए, क्या मुझे पैसेज डेवलप करना चाहिए? यू आर नॉट अ कंटेंट डेवलपर, डू नॉट गो इन दैट वे. आपको पढ़ना है बस, ठीक है. क्वेश्चन मत ही बनाओ. डू नॉट फ्रेम क्वेश्चंस आउट ऑफ दैट आर्टिकल्स दैट यू रीड इन एडिटोरियल. You can refer to various reading comprehension books. If you do not have any source, we provide it on a complimentary basis. आप देख सकते हो that we have a channel, Telegram channel, wherein the name of the channel is Manu Law Classes CLAT Preparation Legally Yours, जिसमें हम complimentary passages provide करते हैं. Per day a passage followed by 5 questions.
then by 5 o'clock we provide the answer key. तो इससे क्या होता है कि you do not have to make questions. You are reading somewhere and then you are testing at Manu Law Classes Telegram channel कि this is the passage by 10 o'clock in the morning. I have to solve it and by 5 I will be getting the result. What is my status? So you can आप वो कर सकते हो and make sure that it is free of cost. हाँ, complimentary passages है, so do not have to pay anything for that. Again, you said आप बोलो कि sir you said jotting down the words, noting down the words. Words की क्या importance है? एक passage है, let's say एक passage है and there is a difficult word. That difficult word can mislead you sometime if you misunderstood it. So it is necessary to have command over words. So jotting down words will help you because every word is important when you are given a time frame of 5 minutes, 4 minutes to solve a reading comprehension. If you are stuck at any words, समझ नहीं आएगा, फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा एंड जब आप ये मॉक देना शुरू करोगे ना देन यू विल रियलाइज कि क्या होता है एक एक वर्ड अगर ना समझने का इफेक्ट. ओके, analyze word family. What is word family? Word family is like understanding the family of the word. Let's say कि there is a word procrastination. इसका मतलब होता है टालना, है ना. एज अ स्टूडेंट लाइफ हम बहुत ज़्यादा करते हैं बट व्हेन यू कम इनटू प्रोफेशनल लाइफ देयर इज़ नो वे यू कैन प्रोक्रेस्टिनेट थिंग. यू हैव टू रिपोर्ट टू योर मैनेजर, यू हैव टू रिपोर्ट योर बॉस कि ये काम क्यों नहीं हुआ, ये काम क्यों नहीं हुआ. एज ए स्टूडेंट हम करते हैं, सो डू नॉट प्रोक्रेस्टिनेट. ठीक है, सो मैंने क्या बोला, प्रोक्रेस्टिनेट ये एक वर्ब है, प्रोक्रेस्टिनेशन एक नाउन है. समटाइम्स यू कैन से लाइक माई फ्रेंड हैज़ अ प्रोक्रेस्टिनेटिंग बिहेवियर. सो यहाँ पे जो वर्ड प्रोक्रेस्टिनेटिंग यूज़ किया गया है दैट इज़ एन एडजेक्टिव. So in that way you develop the understanding कि okay this word is used in that way and this word has been used in that way. All right, now discuss words with your peers. देखो words learning भी एक art है, it is not a day game. जैसा कि मैं बता रहा हूँ, you have to keep repeating that word. You can talk to your peers, you can talk to your friends कि आज मैंने ये वाला word सीखा, tell me the meaning of this. So she or he will get hit कि ओके ये तो मुझे भी नहीं आता. सो इन दैट वे यू आर हेल्पिंग योर सेल्फ बिकॉज यू व्हेन यू आर प्रोनाउंसिंग अ वर्ड अगेन एंड अगेन you are indirectly putting that in your brain, right? So that's why it is very very important to discuss the words. जो भी word prepare किया है, discuss it with yourself, discuss it with your peers, friends, and then revise. कभी ये ना भूलें कि अगर आपने एक डायरी बनाई है, you have noted down the word and you are done. No, that's not the case. You have to revise it. Not one time, 2 time, 3 time, after every alternate days, है ना. हर 2 दिन में आप पीछे मुड़ के जाओ, हर दिन में आप पीछे मुड़ के जाओ. इससे क्या होगा कि आपको पता होगा कि ओके आई हैव नोटेड डाउन दिस वर्ड हियर एंड देयर. आई हैव ऑलरेडी गिवन द एग्जांपल ऑफ रिपीटिंग द वर्ड अगेन अगेन. वाई, व्हाट इज द रीजन दैट रिवीजन इज इम्पॉर्टेंट. सो मैंने प्रीवियस वीडियोज में भी डिस्कस करा हुआ है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, इट सेज कमांड ओवर ग्रामर सेक्शन. See when we talk about only CLAT, स्टूडेंट को लगता है ग्रामर तो आता नहीं है, AILET में ग्रामर आता है, अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम में ग्रामर आता है, बट ग्रामर को उस नज़रिए से ना देखो. ग्रामर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि अगर आपको ग्रामर नहीं आता ना, सो यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि जो पैसेज लिखा हुआ है वेदर इट हैज़ बीन रिटन इन अ प्रेजेंट सिनेरियो, पास्ट सिनेरियो, फ्यूचर सिनेरियो. ओके, सो दैट इज़ हाउ ग्रामर इज़ इंटीग्रेटेड इन योर प्रिपरेशन. Even though they explicitly do not ask any question based upon grammar, and they have also provided their sample papers wherein they have mentioned so many questions जिसमें कि वो grammar के preposition missing कर दिया था sentence में, sentence को reframe करके बनाया गया है. So no wonder they can, है ना, who knows, वो incorporate कर सकते हैं कुछ भी. So grammar preparation के लिए क्या करना आपको, you can go through our MLC grammar book if you have. There is a set of 4 books for English grammar, reading comprehension. If you are a student, if you are not a student also, you can buy the same. There are also a lot of books available in the market. You can refer the same for grammar section. Also I will make a list of books which are important grammar books, right? Then watch question of the month series. एक हम बनाते हैं question of the month series every month on YouTube itself, wherein I discuss first the reading comprehension and then I discuss in part B the grammar section. So if you are watching that, good for you. And then analyze previous 10-year questions. This is one of the important words or points that I want to discuss. Why?
क्योंकि देखो क्या होता है, when you are analyzing the questions, you are understanding, okay, from this part of grammar they have asked the question, so by going through the previous year question of 10 years you will understand कि मुझे यही section से ये चीज़ें पढ़नी चाहिए, and here then it becomes very crucial when you analyze 10-year papers and your preparation is affected by that. All right, now mock test क्या होते हैं? mock test वो टेस्ट होते हैं, they are made like your exam paper, right, and you have to attempt that within the same time frame, जिसमें उतना 120 minutes आपको मिलते हैं, 120 minutes यहाँ भी मिलेंगे, and then you have to take that test. It can be free also, बहुत सारे ऐसे websites हैं जो free में भी provide करते हैं, and if you are a student of any coaching, the coaching provide you a lot of mock tests, as we do in Manu Law classes, and some of the students who do not have that access, they can also go for free. There are a lot of free mock tests on various websites. You just have to Google everything. The world is quite easy these days because you can Google things and get to learn, right? So if your strategy, if your intention is quite set, I would say, so you will make it. Now केवल मॉक दे देना ही बड़ी बात नहीं है, मेक श्योर दैट यू एनालाइज इट. Analysis is important. Let's say it just took 1 hour and 20 minutes to finish the mock. It might take 3 hours to analyze the mock. You would say कि सर 3 hours waste of time हो जाएगा. नहीं, waste of time नहीं होगा. Why? अगर आपने randomly option लगाए हैं और वो मान लो कि सही भी हो जाते हैं, so वो सही आंसर नहीं है, right? You did not understand that. So what you need to do, if there were 150 questions, so पहले तो जो सही है उसे छोड़ दो because you knew it and आपने जानकर लगाया था. If you have just randomly marked A, B, C, D कुछ भी, तो उसे जरूर देखो कि what was the rationale behind being this the correct answer. In that way you analyze the mock. So here that is why mock is very important factor. So when January begins, वहाँ से आप अभी कोई मॉक देने की जरूरत नहीं है. When January begins, वहाँ से आप छोटे छोटे मॉक्स देना शुरू करना. Like छोटे छोटे I mean that कि जो टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, मॉक्स आर डिजाइंड इन दैट वे. ओके, सो moving on to the further slide, that is keep motivating yourself. Motivation is necessary. Motivation is as necessary as bathing, someone said. क्यों? क्योंकि देखो every time you study, your brain exhausts throughout the day. Sometimes you are sad, sometimes you are happy, sometimes some people say bad things to you, sometimes you are pumped up by something. So motivation is necessary when you are down, when you are not in mood to study. तो motivation के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहले देखो student frustrate हो जाते हैं कब when they see कि सर बोर्ड्स एग्जाम भी आ रहे हैं, क्लैट प्रिपरेशन आ रहे हैं, अब मैं बैलेंस नहीं बना पा रहा हूँ. देयर यू नीड मोटिवेशन. हाउ डू यू गेट मोटिवेशन? बाय टॉकिंग टू योर पीयर्स. जैसा कि मैंने लिखा है कि डिस्कसिंग योर मेंटल चैलेंजेस. सो समटाइम्स यू स्ट्रगल अलॉट, राइट? समटाइम्स यू स्ट्रगल अलॉट थ्रू आउट द प्रिपरेशन कि मेरे से ये नहीं हो रहा है, मेरे से वैसा नहीं हो रहा है. सो एट दैट टाइम यू नीड टू डिस्कस इट विद whom you can go to. You can go to your parent, you can go to your mentors, whosoever your mentor is. इससे क्या होगा? They will be guiding you कि ये ऐसा होता है because they have been in your shoes. Every time I say कि जब आप अपने पेरेंट्स या अपने गार्डियन या अपने पीयर्स के पास जाओ, पीयर्स मेंटर्स के पास जाओ, तो क्यों जाते हैं हमने? बिकॉज वो हमारे इस सिचुएशन से निकल गए हैं एंड दे नो हाउ टू हैंडल व्हाट हैड टू डू. उन्हें बाद में कभी कभी पता चलता है, इसलिए वो उस समय तो नहीं कर पाते, बट वो दूसरों की मदद करते कि देखो मैंने ऐसा किया था तो मेरे साथ ऐसा हुआ, बट तुम ऐसा ना करना, राइट? दैट इज वाई when you face this mental challenge, you make sure that you are not keeping it to you. On the other hand, go to somebody who can help you. Okay, so balance your CLAT examination with board exam boards. Discuss this with your mentor, discuss with your teachers, discuss with your anybody who has been through this preparation. They will tell you कि कैसे बैलेंस को बनाना होता है. बिकॉज ये 1 मिनट की बात नहीं है, ये मैं आपको यही नहीं बता सकता. यू विल हैव टू प्लान योर स्ट्रेटेजी. यू हैव टू सी कि कब से मेरे बोर्ड्स एग्जाम हो रहे हैं, कौन कौन से संडेज हैं जिसे मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ, एंड सो ऑन. And then listening to podcasts for mental health. Mental health is important. People do not consider it is important, but it is very very important. अगर आप tensed हो, so there is some reason, and that can affect your studies, right? So in that case, you need to listen to some podcasts, some things like that. All right. So I hope I have been very very clear in explaining. These are some points that we need to do. Let us go through one by one again, so that you can memorize that. First point was
either if you are a coaching institution student or not. So you can follow the same. You can take a screenshot of these slides. Next, prepare a detailed, realistic schedule. I emphasize realistic. Do not consider yourself a machine. You are a human being, so plan accordingly, right? Third is selection of your sources. जब भी आप पढ़ो तो कुछ भी नहीं पढ़ने लगना है. Go for the sources which are prominent. Point number 4 was newspaper reading, and I have discussed all the important points of the same. Jot down words. I have already told you कि क्यों important है words को note करना. Command over grammar section. कैसे command होना है? You have to watch some videos related to topic. First you see the bifurcated exam paper of yours, right? CLAT के 10 साल के bifurcated exam paper होंगे. जैसे कि in Manu Law Classes, what we have done, I have personally bifurcated 10-year paper and have made a section कि okay, antonym से ये question आए थे throughout 10 year, then synonym से आए थे, then there were question based upon subject verb agreement, then there were question based upon you can say figures of speech and various topics of grammar wise. In that way, so उनके लिए तो आसान है who are with us, but for those who are not, there is no any mentor, you can just do it by yourself. It's not that difficult. Go through the questions. Ultimately you have to go through the question, right? So अभी उसी में mark करते जाओ कि this question belongs to synonym, this question belongs to paraphrasing. In that way your preparation will ace. Now mock test, it is very very important. And the last point was keep motivating yourself. You can motivate yourself by balancing, talking with your parents, mentors, and then watching or listening to podcast or some inspirational thing, some inspirational stories. All right, at the end I would like to say thank you so much for being here with me live. You can join our YouTube channel, you can subscribe to it, you can share the videos which are very very important on our channel. Stay tuned in your learning. If you are facing any problem, do reach out to us. Thank you so much.